It's a big India Today impact after India Today has posed hard-hitting questions on the rogue Neta and how he should be punished. His wings have literally been clipped now because Federation of Indian Airlines has barred him from flying. That means that Indigo, SpiceJet, even Jet Airways and of course Indian Airlines will not be taking him on board. Rogue Neta Ravindra Gaikwad will not be allowed to fly on the Indian carriers is what the Federation of the Indian Airlines has said. My colleague Anindya getting us this exclusive as well. Anindya, an unprecedented order. Take us through the details of this order. Well, unprecedented indeed, but there's a bit of clarification that we need to put forth here is that the members are all, what it does mean is that only the member airline will have to oblige that order. The members are, if I can read out, full service carriers are carriers are Jet Airways and low cost carriers are Go Air, Indigo, Jetlight and SpiceJet, which means that any airline apart from this list that I have just read out are free to take him on board. That's another fact that whether morally they will want to take him on board is a matter of matter to be seen, but which clearly means that airlines like Air India are free to take him on board. There's no bar on that, but that again, as I said, is a moral fact considering the fact their own member, a member from the own Air India family has been brutally assaulted. Now, having said that, it clearly leaves him with very little option than to fly Air India or there are very few regional airlines that he can fly, or for that matter he has to travel through train or bus. So very clearly, I mean, don't go by the the technicality of the resolution, Devina. Go by the almost the spirit of the resolution. All the airline and umbrella body of an airline, Indian Federation of Indian Aviation, the umbrella body, the apex body, all coming in support of a national carrier. Which is not even a part of it, and you standing in solidarity with it. That's something unprecedented, and that too against a sitting MP of Lok Sabha, Ravindra Gaikwad, who has gone on record to admit that he has assaulted 25 times with his sandal. Well, and in fact, Anindya, this morning when he was speaking to India Today, yet another exclusive that we got from our reporters is this. He says, I have an Air India ticket and I'm going to Pune at 4 p.m. and whoever wants to stop me can stop me. Right now they haven't blacklisted me. So Air India is on its way to blacklist this Neta. And the names that you read out right now, Anindya, basically are all the domestic carriers, because you're talking about Jet Airways, you're talking about Indigo, you're talking about SpiceJet and Go Air. All of them barring this Neta from boarding their flight after the order of Federation of the Indian Airlines. And this is showing the way also to how our Netas should act. Shiv Sena should pull him up and how he should be made to answer at the ethics committee in the parliament as well. Be with me, Anindya, because I want to play out that reaction where Ravindra Gaikwad till about an hour back was very confident that he'll be able to fly to Pune and he already has an Air India ticket. माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे ब्लैकलिस्ट क्या करेगा? आज तो एयर इंडिया की फ्लाइट से 4 बजे मैं पुणे जा रहा हूँ, मेरे पास टिकट है आज का क्लियर, और उसको तो मुझे ले जाना ही पड़ेगा आज, मैं तो उधर हंगामा करूँगा। और Anindya is still with me, but also want to play out a reaction of Shiv Sena ally, the BJP, which has condemned this incident and also urged its ally to take action against this rogue Neta. Mr. Gaikwad's conduct is not just obnoxious, it needs to be condemned univocally. Any member of parliament, MLA, corporator or elected representative taking law into his hands or her hands and beating up an employee like this is so shameful. I think it is for corrective measures to be taken at every party level and where the introspection is based on conduct in public life. As far as the Civil Aviation Ministry is concerned, 2 FIRs have been lodged, one because of the inconvenience caused to public and the delay of the flight, and second, more importantly, to stand in solidarity with the Air India staffer who was abused, assaulted repeatedly without an apology. My colleague Anindya is still with us. Anindya, as we're getting this big breaking news that there would be no seat given
to Gaikwad in the Indian Airlines. The domestic carriers are refusing to give him a seat because of his rogue behavior. Now, Air India is also saying that they will be blacklisting this Neta. You've had Jet Airways, Indigo, SpiceJet and Go Air. And tell our viewers also how this order will be implemented, whether the foreign airlines will also be taking an action against him, because this is unprecedented, a member of parliament being barred from flying. Absolutely, and this is going to be a huge amount of pressure on Ashwini Lohani, the chairman and managing director of Air India right now. Yesterday, he has gone on record to say in a statement that yes, we are going to create a no-fly list, but it doesn't mention that whether this gentleman, Mr. Gaikwad, will figure in that list or not. But yes, there's going to be because huge amount of frustration among the rank and file. I have been speaking to a lot of people from Department of Personnel, Department of Finance, Department of IT, Department of from ACEU, that is one of the unions, union from Anandya, be with me, getting a reaction from Ravindra Gaikwad on this order. Let's take a listen. वो आके पहले माफी मांगे, बाद में देखेंगे। यार आपको एफआईआर दिखाया है यार, एफआईआर बैन कर रहा फ्लाइट करने से, बैन कर रहा आपको फ्लाइट करने से। अरे 4-15 का फ्लाइट आज का बुक है मेरा पुणे, और वो फ्लाइट से जाऊंगा मैं। अरे केस का क्या सवाल है, जामीन लेगा ना मैं, वो क्या एक्ट देखूंगा, हमारे लॉयर देखेंगे, हमारा पार्टी देखेंगे, हमारे उद्धव साहब ठाकरे देखेंगे। और अगर एयर इंडिया जाने नहीं दिया तो ऐसा नहीं देगा, बुक है ना, मैं पैसेंजर हूँ ना। आपने लेटर लिखा है? देखो किसको लेटर लिखा है सर आपने? अध्यक्षा को लिखा है, मिनिस्टर को लिखा है। सर उद्धव साहब के टाइम से आपसे कहा जा रहा है कि उन्होंने कॉल किया था आपको, आपसे बात हुई है उनकी? मेरी बात नहीं हुई सर। क्या ये सच है कि आप कल रात को मूवी देखने गए थे सर? यस सर, आई यू नॉट अपोलोजाइज नहीं करेंगे सर इसको लेकर सर? अरे तुम लोग सब दिमाग खराब कर रहे थे, जाके मूवी देखते सर। कौन सी मूवी देखी आपने? इसके बाद क्या घटना, ऐसी घटना के बाद आप मूवी देखने चले गए? अरे टेंशन फ्री होना चाहिए ना। कौन सा मूवी था वो? शादी गायकवाड़ साहब, बद्रीनाथ की दुल्हनिया देखने गए। गायकवाड़ साहब, क्या आपको लगता है? आप भी देखो, बहुत बढ़िया पिक्चर है। गायकवाड़ साहब, सब फैमिली देखते हैं। एक आखिरी सवाल, गायकवाड़ साहब एक आखिरी सवाल है कि आपको नहीं लगता है कि आपके इस हरकत से पूरा पार्लियामेंट निराश हो रहा है? पार्लियामेंट मैं अभी पार्लियामेंट में जा रहा हूँ, पार्टी की ओर से अनिल जी देसाई पार्लियामेंट में, और इधर संसद में, राज्यसभा में वो बात करेंगे पार्टी की ओर से, हमारे नेता है, और इधर आनंद जी आर्ट्स साहब बात करेंगे। बहुत सारे वो जो आदेश देंगे, पार्लियामेंट का नाम उठाएंगे क्या आप लोग? बढ़ाया, आप लोग सदन में मामला उठाएंगे क्या? बस हो गया यार। Shameful and disappointing. Shameful and disappointing. This response from the Sena MP. He goes to say that I went to watch a movie. I am not scared, and let anyone stop me from boarding that 4 p.m. flight which I have a ticket for by Air India. And this is coming in the background of Federation of Indian Airlines that has decided not to board Ravindra Gaikwad in any of its member flights, that is all the domestic carriers essentially. Air India is deciding to put him on a blacklist as well. But in spite of his rogue behavior, he is unrepentant. He doesn't have any tension. He's saying that let them try and stop me. Take a listen in to, once again, Ravindra Gaikwad, his reaction coming in. और मेरा गलती रहता था तो जब स्ट्राइक पे जाते थे। सर वो कह रहे हैं कि इसके पहले भी सर इसी सदन में मारपीट का आरोप लगा था। इस सदन में आपने शायद रोटी वाले इंसिडेंट में जब आपने एक मुस्लिम कर्मचारी को रोटी खिलाया था। अरे मैंने मिटाया था यार। क्या किया था आपने? मैंने मिटाया था लफड़ा वो। अच्छा, उसमें आप शामिल नहीं थे? नहीं, मैंने तो रोटी निकला बाहर जी। अच्छा। और रोटी का लफड़ा उस टाइम उनका रोजा चालू था जी। रोटी जिस दिन हमने खिलाया जी, वो हमारे सांसद जी खिला रहे थे, मैं उनको रोका जी। मीडिया वालों ने उस दिन नहीं बोला रोटी खिलाया, उसका रोजा तोड़ा बोल के 4 दिन के बाद बोला तुमने। मीडिया को मालूम हुआ 4 दिन के बाद वो मुस्लिम है, उसका रोजा है बोल के। कोई पश्चाताप आपको है जो कि आप काय के लिए मेरी गलती नहीं तो पश्चाताप का है। मैं नहीं मांगूंगा, वो आके माफी मांगना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने 2 कंप्लेंट रजिस्टर करी है। मुझे अरेस्ट करे दिल्ली पुलिस, मेरा पार्टी उद्धव साहब देखेंगे। सर आप
गाड़ी तिकडे हो अरे 4:15 का फ्लाइट आज का बुक है मेरा पूना और वो फ्लाइट से जाऊंगा मैं। अरे केस का क्या सवाल है, जामीन लेगा ना मैं। वो क्या एक्ट देखूंगा, हमारे लॉयर देखेंगे, हमारा पार्टी देखेंगे, हमारे उद्धव साहब ठाकरे देखेंगे। और अगर एयरवेज जाने नहीं दिया तो ऐसा नहीं देगा, बुक है ना, मैं पैसेंजर हूँ ना। आपने लेटर लिखा है? देखो किसको लेटर लिखा है सर आपने? अध्यक्ष को लिखा है, मिनिस्टर को लिखा है। उद्धव ठाकरे नाराज है आपसे, उद्धव साहब नाराज है आपसे, नाराज है, कहा जा रहा है कि उन्होंने कॉल किया था आपको, आपसे बात हुई है उनकी, नाराज है वो। मेरी बात नहीं हुई सर। क्या ये सच है कि आप कल रात को मूवी देखने गए थे सर? यस सर, आई यू नॉट मूवी देखने गए थे? अपोलोजाइज नहीं करेंगे सर इसको लेकर के सर? अरे तुम लोग सब दिमाग खराब कर रहे थे, जाके मूवी देखते सर। कौन सी मूवी देखी आपने? इसके बाद क्या घटना, ऐसी घटना के बाद आप मूवी देखने चले गए? अरे टेंशन फ्री होना चाहिए ना। कौन सा मूवी था वो? शादी गायकवाड़ साहब, बद्रीनाथ की दुल्हनिया देखने गए। गायकवाड़ साहब आप भी देखो, बहुत बढ़िया पिक्चर। अच्छा, एक बात फैमिली देखो। आप अपोलोजाइज नहीं करेंगे? आखिरी सवाल है कि आपको नहीं लगता है कि आपकी हरकत से पूरा पार्लियामेंट निराश हो रहा है? पार्लियामेंट मैं अभी पार्लियामेंट में जा रहा हूँ, पार्टी की ओर से अनिल जी देसाई पार्लियामेंट में, और इधर संसद में, राज्यसभा में वो बात करेंगे पार्टी की ओर से, हमारे नेता है, और इधर आनंद जी आठवले साहब बात करेंगे। बहुत सारे एमपी जो आदेश आपने पार्लियामेंट का सदन में मामला उठाएंगे क्या? आप लोग बढ़ाया। आप लोग सदन में मामला उठाएंगे क्या? आप से कोई बात हुई क्या आपकी? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, वो जब बुलाएंगे तब बोलूंगा मैं। कहा जा रहा है आदित्य ठाकरे भी नाराज है आपसे। अरे यार, मुझे मुलाकात नहीं हुई, जब वो बोलेंगे तो वो सुनेगा ना, मैं शिवसैनिक हूँ। For him, it's a laughing matter. Assaulting an Air India officer who's 60-year-old 25 times by slip-up for no fault of his is a laughing matter. For him, a power trip means that the entire nation can call for an action against him, but he'll go and watch a movie. He says that my party chief Uddhav Thackeray will take care of it. My lawyers will take care of it. And daring a national carrier that I have a ticket at 4 p.m. to go to Pune, come and stop me. This even after the Federation of Indian Airlines has said that this Neta will not be allowed to board any of the domestic carriers. Now this is the power trip that is getting uglier by the minute of this Neta, because he is not being pulled up by his party at all. No word coming in from Shiv Sena till now. He's confident that he'll be supported in the parliament also by his party and defended by them. We take a short break, talking more about this after this break.